एक मिनट आगे मत जाओ, आगे मत जाओ। जी, तो आप अपने कुछ किरदार के बारे में बताएंगे और ये गुड नेम प्लीज। मेरा नाम है पृथ्वी सांखला जी। और जो इस सीरियल में मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ उसका नाम है हर्षद पारेख। इस पारेख परिवार का सबसे बड़ा बेटा है। 3 बेटे हैं, उसमें सबसे बड़ा बेटा है ये। बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है और बहुत प्यार करता है सबको, बच्चों को, बीवी को। माँ की बहुत रिस्पेक्ट करता है। उस परिवार में सबसे ज़्यादा माँ की चलती और माँ के विरुद्ध कोई नहीं जा सकता। ये है इसका आधार सीरियल का। और बस सबका ध्यान रखने वाला बड़ा बेटा है ये परिवार का। सो मेरी आशिकी तुमसे ही किस तरह का शो एग्जैक्टली नाम से जैसे ये नाम से ही टाइटल से ही क्लियर है कि एक रोमांटिक है जी जी क्या जी, और क्या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये और क्या आप कुछ है सही इसमें? कह रहे हैं, बस नाम से ही जाहिर है उसका। जी जी और अब वो किस तरीके से कहानी रिवील होगी, मेरे ख्याल से उसको आप देख करके जानें तो ज़्यादा मज़ा आएगा उसका। आमतौर पे जैसे टेली सोप्स होते हैं जी बेसिकली वो हाउस वाइफ्स लेडीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाए थे उसमें सास बहू का हमेशा ही जो है टसल होता है इसमें भी ऐसा कुछ है। अब इसमें तो देखिए धीरे धीरे पता चलेगा कि क्या है। लेकिन हाँ, इसका बेस जो है वो आशिकी है, जैसा कि इसके टाइटल से जाहिर है। तो किस तरीके से अपने माँ बाप को देख कर के और बच्चे उसको समझ रहे हैं, उससे सीखा है, कैसे देखते हैं, तो वो है। इसमें हीरोइन जो है मेरी बेटी, जो हीरोइन है उसके फादर का कैरेक्टर कर रहा हूँ। तो वो बच्चे किस तरीके से अपने माँ बाप को देख कर के बड़े हुए हैं, कैसे उन्होंने आशिकी सीखी है, इस तरीके से कुछ बताया गया है इसमें। खुद आपने इसका अपने कैरेक्टर करते हुए कितना एंजॉय किया I was like, कितना? देखिए बहुत मज़ा आ रहा है। जो मैंने पिछला कैरेक्टर किया था उससे जुदा है ये कैरेक्टर। और अब जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे चीज़ें आएंगी, वो मज़ा बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, थैंक यू ओके, सो मच। थैंक यू वेरी मच। launch of this show. So do you think that half of the battle is done, like, since you have become a star material now? No, no, no. I'm not acting in the show, so there's no chance. Or So I think मेरे को जो लगता है कि एक शो का USP उसकी स्टोरी होती है. अगर स्टोरी चल गई तो then that's half the battle won. Then of course there's other factors like if there is no cricket match. But the biggest battle for any producer and the biggest battle for television is that we don't have any stars on TV. Neither me, neither the name of a production house will bring somebody to watch a family on TV every day. And TV is about opening day reading, what do you call TR also. So it's always a story that will pull people, the characters that will pull people. So there is no battle yet won unless the show becomes popular and the characters become popular. Then it's half the battle won. movie of these soaps that carry soaps. So do you have such kind of fantasy programs? No, I'm not casting myself. No. Why did you decide to have two newcomers in the? She's perfect for the role, and after that audition, she went through some workshop because she's a new actor. And I think there was a vulnerability required.
vulnerability is something that with a lot of talent or a lot of practice, a lot of acting goes away. So I needed that raw talent, and she had that. Hi, like after you're like successful for television, now even you're booming with the success in Bollywood movies too. So what's your success mantra? आई डोंट नो अबाउट रूलिंग एनीथिंग एंड अब मैं अभी शो के बारे में ही बात करते हैं बस मेरी एक पिक्चर रिलीज पे है और मैं उसके पहले कोई इंटरव्यू नहीं देना चाहती हूँ नेक्स्ट टुमारो यू लास्ट वो भी अच्छी एक फिल्म जो रिलीज हो रही है वो भी अच्छी स्टोरी है उसके. जय माता दी आपके मुंह में घी शक्कर बट आई डोंट नो अभी क्या होगा तो एज आई सेड कि शो के बारे में ही बात करते हैं आई एम ओनली आई हैव बीन वार्न्ड एंड कंटिन्यूसली दैट वी आंसर अबाउट द शो सो आई ट्राई माई बेस्ट एंड उसके बाद आई लीव इट टू गॉड Questions on the show, please. Can you hear to Meri Aashiqui Tum is a love story. Yeah. And there are a lot of love stories on television. Yeah. So how would you say this is different from the rest? Well, I don't say that this is different from the rest. I always believe that there's always a connect. I always believe God is in detailing, you know. You have a Ram Leela, you've seen many love stories. But when you saw Ram Leela, you liked that film a lot more. It was the way the characters were created. It was a small detailing in Ranveer's character, the detailing in Deepika's character, the world created. You penetrated that world. It's much tougher to be different after being similar. In fact, it's actually a challenge. So we try to create a world. We try to see that in these love stories, you find relatability. So you'll have a million love stories on air, and then one will hit home. It may not be mine, it may be somebody else's, but then you'll say, oh, there are hundreds of love stories on air, or movies, or in some American shows. Why is this one becoming so interesting for me to watch? And then you'll realize it's the small differences that make the big picture different. Never the big picture different. That will actually make the difference, you know, because you can't make it unrelatable. It has to be relatable. But then you've seen the stories a million times. But then they will put some zing or something in the character that will be, oh, okay. It's like tea. You'll go to this tea stall or this sandwich wala, which you love the sandwiches of. Everyone can make a sandwich. But it's always that little bit of difference, you know. Hi Ekta, this is Bharti from Television. So Ekta, is Ekta's era back? I mean, now there are many shows coming on various channels, and which we had this earlier. There was no Ekta's era ever. No, but we feel that Ekta's era is back No. now. Ekta was a TV producer who had no life, who only worked 24 hours of the day. That's never coming back. Ekta hopefully will have a life. But I'm doing a lot more TV because I'm getting a chance to explore. TV is no longer typical. It gives you a chance to do different shows. So अभी सबको chance मिल रहा है तो मुझे भी मिल रहा है. So what is your next thing that you're planning on television? Anything different from I'm going to get fired if I speak about anything but Meri Okay, Aashiqui. okay. The next show that I'm launching, which is very different, is Meri Aashiqui Tum. Okay, one more question I want to know. Is this show based on a novel Muttering Heights? No, it's not. See, that's what I'm saying. Anything which has got to do with it, with a poor guy and a rich girl, you can even say it's Downtown Abbey, or you can say it's like what do you call Fountainhead. It's got a classic appeal to it, but visually you'll say, oh, it reminds me of Ram Leela, but it's nothing like that. See, we human beings are actually reactors to various influences that come in our life, and sometimes we get so influenced that we actually end up copying. Sometimes we keep it at bay and leave it at an influence, and then from there start creating our own story. So I always look at this show as somewhere two families living in one house, one middle class, poor, the haves and the have-nots. And in a family where you live in the same house, you never consider your staff or people who are helpers as a part of the family. But everything that's happening to you is happening to them too. So it's about these two families that are coexisting in the same house,
the haves and the have-nots, with various, some very archaic, some very modern thought processes. And because they're living in the same house, they almost become one family. So that's Ekta Gauri show. Last two We are questions. seeing Gauri back on television after 5 years. So how you made that possible? Gauri is a brilliant actor, worked with me last, and I'm honored that she's working with me again. I think it's an interesting character. It's very different from what Gauri has done all these years on TV. She has a very pretty face, so she's been given classically positive roles. I won't say this is a negative role, but I would also definitely not classify it as a completely white character. I think she's got a lot of edges in this show. She plays a woman who's overtly practical. Somebody जो कुछ I mean लोग उसे पत्थर दिल भी कह सकते हैं, because उसने अपनी लाइफ को बहुत ही दिमाग को इम्पोर्टेंस दी है, दिल को नहीं दी है. And she wants her daughters to be like that. She wants them to look pretty and marry right, not marry with the heart, you know, because she believes that women who think are always happier than women who feel. Was it tough job to convince her, or like it was like? I mean, ask her. This is a question you should throw to her. एकता, आपके जितने भी शोज रहे हैं अक्सर शोज में बड़ी गुजराती फैमिली दिखाई गई हैं, तो इस शो में भी एक गुजराती फैमिली, इतना प्यार क्यों है आपको गुजराती फैमिली से? एक्चुअली मेरी ये सेकंड शो है गुजराती फैमिली से. उसके पहले मारवाड़ी थी, अभी रिसेंटली पंजाबी भी है, तमिलियन भी मैंने किया है. बड़ी फैमिलीज होती हैं आपके हर हाँ, बेसिकली गुजरातीज आर माई फेवरेट. आई मीन नाउ वी हैव अ Prime Minister is Gujarati, guys. Let's all be very pro Guju. अच्छा, एकता ये सिंड्रेला से स्टोरी का कुछ कनेक्शन है तो? So ये Cinderella meets Wuthering Heights meets Great Gatsby meets मुकद्दर का सिकंदर, stops at Fountainhead and then takes a giant leap to Ram Leela. Thank you guys. Thank you so much. Which is launching on Colors, 10 p.m. slot from 24th June. So please guys do watch it. Okay, बात करें तो मेरी आशिकी तुम से ये एकता कपूर जी का शो है और एकता कपूर वो टीवी इंडस्ट्री की जार मानी थी, तो कितना एक्साइटेड हैं और कितना नर्वस हैं? Super excited हूँ, adrenaline rush है मेरी body में and plus it's a boy centric story. What else I could ask for? It's a dream role and मतलब मैं बहुत खुश हूँ. मतलब इतना बड़ा चैनल, इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस, ऊपर से stories about the boy. So सोने पे सुहागा है मेरे लिए. Okay, जब सबसे पहले आपके पास ये स्क्रिप्ट आई तो ऐसा क्या उसमें लगा कि आपको you should just do this? As I said कि स्टोरी पूरे लड़के के ऊपर है, वही एक मेरे लिए सबसे बड़ा किक था. दूसरी चीज़ इट्स अबाउट रोमांस विच आई ऑलवेज वांटेड टू डू, और ये वन साइडेड लव स्टोरी है. सो लड़का बहुत प्यार करता है लड़की से, बट एट द सेम टाइम ऐसा दुखियारा नहीं है, मस्तीखोर है, यू नो, सारा टाइम मस्ती करता रहता है लड़की के साथ. तो वो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट लगा मुझे कि आई विल गेट टू प्ले द शेड्स, different shades, romance, you know, masti, seriousness. So I'll get to play all those characters in one character. In the same time as there are other more shows which are based on the same theme. How different is yours? That's why it is different, because you know this character has various shades. And रणवीर का एक ऐसा कैरेक्टर है जो घर में बहुत आसानी से जल कर जाता है. ही मतलब वो टिप्स बहुत देता है रिगार्डिंग टू स्टॉक मार्केट. जो घर के जो ओनर हैं उनको टिप्स देता है और उन्हीं से मतलब वो बहुत प्रॉफिट करते हैं. सो ही इज़ द राइट हैंड ऑफ द फैमिली. वट एवर वर्क वॉन्ट्स टू बी गेट डन, दे हैव टू कैच रणवीर. रणवीर तुम ये मंडप सेटअप कर दो, रणवीर ये प्लीज़ इनको संभाल लो, ये कर लो, वो कर लो. तो एवरी काम के कोई भी काम करवाना होता है तो फिर वो रणवीर को पकड़ता है. So that's how it's special, and plus you'll get to see amazing chemistry between the boy and the girl. They share a very cute chemistry, very nok-jhok kind of a chemistry. So this is an interesting part of the show. बात करें आपके कैरेक्टर की और खुद in real life, is there some resemblance? Resemblance, yeah, I'm a little mastikhor in life and I'm a prankster. I play a lot of straight humor in my real life, and so I think I can, you know, imbibe this thing for this character as well, and I will do it. Okay, thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you.